Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Today in this video, I will be discussing on terminologies related to the body movements which occur at synovial joints. So before starting this class, let me remind you about the last class in which we have discussed about body cavities, abdominal pelvic regions, and also body membranes. Okay, so without wasting time, let's start today's class. But I have a small request that please watch this video till the end so that you can get all the points clearly understood. जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और उसके हिसाब से उसके रिगार्डिंग में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दूसरी वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, आंसर दे दूंगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। Okay, so as we are going to deal with the body movements, so there are mainly four major classification of body movements which occur at the synovial joints. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि synovial joints क्या होते हैं, ठीक है? तो synovial joints जो होते हैं mainly synovial joints are the joints which are freely movable. Okay, जो freely movable होते हैं which are formed by the combination of the two or more bones. जहाँ पे two or more bones का joint होता है उनको हम बोलते हैं joints. ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहां पे एक फ्लूइड होता है उसके अंदर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ही ये जो हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी, ये चाहे अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है, चाहे कोई और भी जॉइंट है, तो ये अच्छे से मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, सो देयर आर मेनली फोर बॉडी मूवमेंट्स। फर्स्ट वन इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, second one is angular movement, third one is rotational, and fourth one is special. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट आप लोगों ने एरोप्लेन देखा होगा, you might have seen the flight flying, या aeroplane you have seen flying, so it used to fly like this after takeoff, like this only, or after it has to get land, it has to be landed, so ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो इससे जो ये मूवमेंट करता है ना, दिस मूवमेंट इज नोन एज ग्लाइडिंग। क्यों, मैं बताऊंगा व्हाई। बिकॉज ग्लाइडिंग मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन द सरफेस ऑफ वन बोन मूव ओवर वन एंड ईच अदर इन ए लीनियर डायरेक्शन विदाउट शोइंग एनी रोटेशनल और विदाउट शोइंग एनी एंगुलर मूवमेंट। यानी जब भी एक बूंद दूसरी बूंद के ऊपर, सरफेस के ऊपर चलती है, दौड़ती है या गर्दिश करती है, ठीक है, या आगे चलती है स्ट्रेट फॉरवर्ड्स, सो उसमें कोई भी एंगल चेंज नहीं होता है, एक सीधे डायरेक्शन में जाते हैं, एक लीनियर, यानी एक ओनली वन सिंगुलर डायरेक्शन में। सो दैट इज नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट। सो वी कैन से दैट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आर नथिंग बट द ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इन व्हिच द बोन्स surfaces of bones move over one another in a linear direction. Very good. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है ना, वो है लीनियर डायरेक्शन, क्योंकि यही फर्क करता है इन मूवमेंट्स को आपस में, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन। अभी अगर हमें एग्जांपल देनी है, मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया, मैंने बोला है एरोप्लेन, व्हेन द एरोप्लेन इज फ्लाइंग दैट इज नोन एज ग्लाइडिंग, उसी को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग, बिकॉज़ दैट विल बी फॉलोइंग द लीनियर डायरेक्शन। सेकंड एग्जांपल इज जस्ट सिंपली यू हैव टू टेक योर हैंड, understanding, so inside your hand there are carpal bones, these carpal bones are producing the linear direction, understanding। जो carpal bones होते हैं हमारे बॉडी हैंड के अंदर, ये क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 bones है, so 1 2 3 4 5, right, so they are okay, so they are taking that linear direction, they are moving in a linear direction, so that's why we can give a best example that is the primary gliding movements that occurs in the carpals of hand, the carpal bones of our hand. Second example I can also give you sacroiliac joint। sacroiliac joint जो एक दूसरे के ऊपर लाई होते हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो कैसे, वो एक दूसरे के सरफेस के ऊपर जो उनके बोन्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो लीनियर डायरेक्शन में होते हैं, so that they also will be producing the linear direction, understanding। and also we can say tibio-fibular movement, जो आपके लेग्स होती है उसके अंदर जो दो बोन्स होती है, टिबिया और फिब्यूला, जो चाहे हम बोलेंगे नी से नीचे एंकल तक
जो या क्या बोलते हैं उसको डिसेंड होता है या एसेंड होता है। अगर एसेंड होता है तो मीन्स जिसमें एंकल से ऊपर आता है, या नी से नीचे जाता है, तो दो ही बुल्स है। तो ये दो बुल जो है एक दूसरे के सरफेस के ऊपर लाई करती है, चलती है, ठीक है। तो लेकिन ये कोई भी एंगल प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी एंगुलर या कोई भी रोटेशनल मूवमेंट इंड्यूस या प्रोड्यूस नहीं करता है। सो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग? सो द एग्जांपल वायर you can say taking your hand, comma, the carpal of hand. So carpal of your hand is the best example for the gliding movement. And we can also say sacroiliac joint. Very good. We can also say tibiofibular joints. तो ये टिबियोफिबुलर जॉइंट भी प्रोड्यूस करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लाइडिंग मूवमेंट। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, एंगुलर। व्हाट इज एंगुलर? सो एंगुलर मूवमेंट हम बोलते हैं तभी जब जो बोन्स होती हैं जॉइंट्स की, जब उनके दरमियान, उन बोन्स के दरमियान एंगल चेंज होता है। वी कैन से द एंगल बिटवीन द टू अपोजिट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉइंट दैट इंक्रीजेस और डिक्रीज। वी कैन से सिंपली व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स change. Understanding? Yeah, when there is the creation of the angle, जब एंगल बनता है, जब वो एक दूसरे के साथ एंगल बनाता है, तो उसी को हम बोलते हैं mainly angular movement. So we can say when there is change in the angle between bones of joint. So इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसमें है, ठीक है, दैट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, एंड लास्ट वन इज circumduction. Okay, extension, flexion, abduction, circumduction. In flexion, what happens? Okay, mainly in flexion, the angle between the two opposite structures, that is bones, it decreases. Flexion में decrease होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। So just if you will take your hand and this is the antebrachium, and this is the forearm. This hand, this is forearm. So when you are creating the angle, or when you are taking your hand near to the forearm, so it will decrease the angle between these two structures. Understanding? So this is known as extension. This is the extension, like this. So when you are releasing the hand back, ठीक है ना, the angle in such a way, the angle is increasing. So then we can say that is known as flexion. Sorry, that is known as extension. Extension and flexion. What is flexion? Flexion is the reduction of the angle. We can say angle between two opposite structures of the joint. Understanding? And on the other hand, if we are supposed to talk about the extension, that means when we are releasing the hands, when there is the decrease, sorry, we can say increase in the angle between two opposite structures. Sorry, opposite structure. That is known as उसको हम बोलते हैं extension. Now, next one is the abduction and adduction. What is abduction? Abduction means when the organ or structure is being taken out from the midline, या is being brought away from the midline. यानी for example मैं आप बोलूँगा आपको, अगर मैं यहाँ पे ये this is my hand and if I am bringing or if I am taking this hand away from the midline, ये midline का मतलब होता है original position, जहाँ पे already structure था, अगर मैं इसको इस मिडलाइन से दूर करता हूं, ऑरिजिनल स्ट्रक्चर से दूर, इसको हम बोलते हैं एब्डक्शन। क्या बोलते हैं? एब्डक्शन, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग इट, सॉरी, आई एम टेकिंग इट अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नोन एज एब्डक्शन। एंड व्हेन आई एम ब्रिंगिंग बैक दिस structure, whether it is upper limb, lower limb, whatever it is, so when I am bringing it back to this area, to that midline, or we can say the original position, that is known as adduction. यानी adding something, add का मतलब होता है थोड़ा सा add करना, यानी फिर से back उसी structure पर या उसी original space पर फिर से उसी structure को लेना, वापस लेना, उसी को हम बोलते हैं adduction. Okay, so now next one is circumduction. Circumduction का मतलब क्या होता है? देखो, flexion, in circumduction all these four movement occurs.
फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। ये चारों मूवमेंट सर्कमडक्शन में होते हैं। क्यों? देखो, when these all the movements we are joining or combining, जब हम सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन करेंगे या कंबाइन करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल बोलेंगे फ्लेक्शन, दिस इज द फ्लेक्शन, ओके, दिस इज द एक्सटेंशन एंड दिस इज द एबडक्शन, दिस इज एडक्शन, लाइक दिस। So this will create one angular, this will create one circular movement, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर जॉइंट, ऑफ द पर्टिकुलर, अगर हम जॉइंट की बात करेंगे यानी शोल्डर जॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो जब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन बनता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन क्यों बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, ये बनता है इन चार मूवमेंट्स को मिला के। जब हम इन चार मूवमेंट्स को आराम से करते हैं, व्हेन वी आर रिलीजिंग आवर हैंड और व्हेन वी आर रिलीजिंग द शोल्डर, ठीक है ना, बाय प्रोड्यूसिंग दीज फोर मूवमेंट्स, बाय अप्लाइंग दीज फोर मूवमेंट्स, सो दैट इज नोन एज circumduction. So this was all about the angular movement, angular movements. So angular movements क्या होता है और gliding movements क्या होता है, okay? So this was all about the gliding and angular movement. Okay, so next one is the rotational movement. I can say rotation. What is rotation? It is nothing but it is the motion of an object, motion of an structure, या we can say movement of a structure around its fixed orbit, या we can say around its central axis or around its longitudinal axis. So, जो भी भूल होता है जब वो उसके फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। जो रोटेशन होता है ये मेनली कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर। सो मेनली हमारे हेड के अंदर भी हो सकता है, यानी हमारा हेड जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है रोटेशनल मूवमेंट, lateral and medial rotation of the head. We can say vertebral column, and we can also say our this one upper limbs, understanding. Okay, so what is rotation? I have already told you that when the object, taken, when the object or structure or bone moves around its fixed orbit or longitudinal axis, that is known as rotational movement. Okay, what are some examples? So examples means I can tell you that where these rotational movements occur, mainly in the head, vertebral column, and we can also say that ball and socket joints. So ball and socket joints at the upper limbs, that is left arm and right arm. So अगर हम head की बात करेंगे, the rotation of head हम बात करेंगे. For example, if I am moving my head to the right side like this, so this is the lateral movement of, you can say lateral movement of my head. So this is known as lateral rotation, okay. And when I am moving it, when I am taking it back to its original position, that is known as midline. So that is known as medial rotation. Again, when I am moving it to the left side like this, like in this way, so this is known as lateral rotation. And when I am moving back to its fixed position, that is known as medial rotation, understanding. So we can say that is the way that this rotational movements can occur at the head. And next one is the vertebral column. So like this, if I am moving the vertebral column like this, so this is the lateral rotation of the vertebral column, and this is also the lateral rotation of the vertebral column. And when I am taking it back to the original, that is known as medial rotation of the vertebral column. And also it can also occur at the shoulder joint. जो shoulder joint होता है, that is ball and socket joint, okay, where there is a creation, where it can create the rotational movement like this. How we can say? So when we are taking our hands, or we can taking our arm. So when we can say, if we will give the example of the shoulder joint like this, okay. So when the shoulder joint, when the arm is just getting separated from the body, yeah, it is getting far away from the midline. So like this. So this is the lateral rotation. So we can see this is a lateral rotation like this. We can see this is the lateral rotation, okay, of the shoulder joint, or we can say of the arm. And when I am taking back it towards the body like this, so this is the medial rotation, okay. So this is the medial rotation and this is the lateral rotation. So now we can say that these rotation movements can occur at the ball and socket joint, that is shoulder joint, and also in the arm, that is right limbs. And also we have already told you, discuss about the vertebral column and as well as head. So this was all about the rotational movement. Okay, so now we have done with the three movements, okay. So now next one is a special movement, okay. So in this special movement we are going to discuss about this following terminologies, okay. First one is the protraction and retraction. What is protraction? Protraction means when the body movement, when any structure is moving forward and side,
Understanding? So let me demonstrate about this movement about the scapula. When the scapula is going forwards and side by side, that is known as protraction. Like this I can demonstrate you. So like this is the scapula. When the scapula is going forwards and it is going and it is going to side by side, so that is known as protraction. When it is coming back, so this is the retraction. So when it is coming back to this one, its original direction, that is known as medial rotation of the scapula, and this is called the lateral rotation, and this is the medial rotation of the scapula. Okay, now next one is the supination. Supination is the rotation of the bone in lateral direction when you are when the palm of your hand is facing upwards. When the palm of your hand is facing upwards, that is known as supination. So this is the lateral, okay, this is the lateral direction of the, we can say lateral direction of the radius bone. Radius bone आप लोग देख रहे हैं, this is a radius bone, okay, which is pointing to the thumb. So when it is laterally moves, so this is known as supination. Understanding? So this is known as supination. And the opposite of the supination is, and when we can say when this one palm is facing downwards. When the palm is facing downwards in pronating, that is known as pronation. Simple example मैं आपको दे दूंगा. When you are taking your hand, when you are taking food, when you are taking your hand, bring your hand near to the plate or the surface from where you are eating, that is known as pronation. Okay, when you are picking something like this, or we can say like this, when you are picking something, so that is known as pronation. And when you are coming and when you are bringing it to near to your mouth in order to eat it, and in order to whatever you want to do, then in such a way that the palm should be facing upwards, so that is known as pronation. Okay, now next one is the elevation and depression. What is elevation? Elevation is the movement of the body part, ठीक है ना, going superiorly या going upwards. जब मूवमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर जो होता है, जब वो ऊपर जाता है, उसको हम बोलते हैं, सो उसी को दैट मूवमेंट इज नोन एज दिस वन एलिवेशन. आप लोगों ने देखा होगा जो आप लिफ्ट में होते हैं ना, लिफ्ट होता है जहां पर भी होता है, चाहे भी किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है लिफ्ट, तो जब वो लिफ्ट ऊपर जाता है ना, एलिवेट करता है, सो दैट इज नोन एज एलिवेशन. और जब वो नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन. ठीक है ना, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिप्रेशन. अगर हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो अब जो हमारा बॉडी, ये जो हमारा बोन है, फॉर एग्जांपल जो बोन है, टिबिया फिबुला बोन है, अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अगर ये असेंडिंग वे में जाते हैं, तो ये यहाँ पे मीट करता है एल्बो जॉइंट को, तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन. सो इस मूवमेंट को बोलते हैं एलिवेशन. और अगर यहाँ से बोलेंगे हम जो ह्यूमरस है, ठीक है, जो शोल्डर के अंदर जो हमारे आर्म के अंदर जो बोन होती है, जो इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस. जो ह्यूमरस व्हेन इट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, व्हेन इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं मेनली this one depression. या सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, when sometimes you are depressed, so your mood will be like this, your head will be like this, so this is known as when there is the we can say when you are facing, the structure is facing downwards, so that is known as depression. Okay, now next one is the dorsiflexion and plantar flexion. What is dorsiflexion? First, पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉर्सम का मतलब क्या था. डॉर्सम मीन्स अपोजिट ऑफ, वी कैन से बैक साइड ऑफ, या वी कैन से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनीथिंग. यानी दिस पर अगर मैं अपने हाथ की बात करूंगा, सो दिस इज द डॉर्सल पार्ट और दिस इज द डॉर्सम पार्ट. ओके, सो वी कैन से दैट इन द dorsiflexion we can say that back of foot facing towards leg. So जो back of foot होता है हमारा, when it is facing leg in order to decrease the angle, जब वो decrease angle करता है, जिसको जब उन दोनों के दरमियान, जब foot dorsum of the foot और leg के दरमियान जो एंगल होता है, जब वो decrease होता है, how in such a way when you are bringing the dorsum of the foot near to the leg, that is known as, we can say that is known as dorsiflexion. Very good. What is plantar flexion? Plantar का मतलब होता है sole of the foot. जो आपका foot होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोल ऑफ द फुट. ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं जो फेस मेनली विच विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ. तो वी कैन से व्हेन द प्लांटर और सोल ऑफ द फुट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, जब व्हेन दैट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, दैट इज नोन एज प्लांटर flexion. Okay, now next one is inversion and eversion. What is inversion and eversion? When the toe, we can say when the sole of the, we can say when the sole of the foot, understanding, is going or is facing towards the midline. जब वो midline की तरफ जाता है ना, sole of the foot, यानी जो sole of the foot होता है, अगर वो midline की तरफ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं this one inversion. Inversion का मतलब क्या होता है? When the sole of the foot turns away from the midline. जब वो midline से दूर होता है, तो उसी को हम बोलते हैं eversion. ठीक है. Now next one is the opposition and the reposition.
यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है. What is apposition? Apposition means when the tip of the thumb is coming in contact with the tip of any, ठीक है ना, any finger like this. So this is known as apposition. This is the apposition. We can say this is the apposition. Apposition का मतलब क्या होता है? When tip of the thumb comes in contact with the tip of any either this one finger. So this is known as this is known as apposition. Okay. What is reposition? When this thumb gets separated from the finger. जब ये thumb separate होता है finger के साथ, इसको हम बोलते हैं like this. This is the reposition. This is apposition, reposition, apposition, reposition. So this was all about some special body movements. I hope you have understood all the terminologies. If you are having any doubt, you can ask me. You can put your feedback. You can put your doubt in the comment section. So I'll pick up the doubts and I will be understanding in the later class. So तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.